So now, first of all, Olympiad में participate क्यों करना है? We are talking about Olympiad preparation with leisure time, but why do we even participate in an Olympiad? And I always tell कि भाई एक reason काफी है कि when you represent Team India and whether or not you get a medal मिला तो यार मतलब बराबरी नहीं है ना much much beyond words so that is something very amazing awesome है ना undescribable moment but even if you participate that itself is a big achievement so when you represent Team India in one of the athletic Olympics the nation is looking towards you and then you are making your parents proud teachers proud gali mohalla shahar everybody every Indian proud so when you participate in Olympics you make everybody proud. Similarly, if you participate in Olympiads, which are like academic version of Olympics, so those are sports Olympics, this is academic Olympics. So when you represent Team India, you make yourself proud and the people you know proud and people who don't you even know you today, they will start knowing you. So वो एक reason काफी है. So when we say, okay, ठीक है, Olympiad की तैयारी करनी है, and I give this reason, basically a big reason, students come up with a very tough decision to make. कि भाई अब मैं Olympiad की तैयारी करूं और आई गो फॉर माई लीजर टाइम मतलब या तो मैं पढ़ाई करके मेडल ले आऊं या कोशिश करके टीम इंडिया में चला जाऊं या चली जाऊं और या फिर मैं अपना बचपन जी लूं है ना दैट्स व्हाट आई मीन बाय दिस लीजर टाइम इज मोर अबाउट योर द मेमोरीज यू आर मेकिंग है ना इट्स मोर अबाउट कि भाई आप एंजॉय कर रहे हो अपने चाइल्डहुड तो या ये करूं या ये करूं एंड आई ऑलवेज से भाई ये और वर्ड हटा के हिंदी वाला और कर दीजिए तो आप इसको हटाकर एंड कर दीजिए सो देयर इज नो डिसीजन टू मेक इट्स नॉट अबाउट ये करूं कि ये करूं यू कैन डू बोथ एंड एक्चुअली यू शुड बी डूइंग बोथ एंड व्हाई बोथ फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाई बोथ दोनों क्यों करने हैं देखो ये बहुत पुराना सेइंग है कि भी ऑल वर्क एंड नो प्ले मेक्स जैक अ डल बॉय बेसिकली अगर कोई कोई स्टूडेंट है ही और शी continuously studies and there is no breaks in between there is no play time एक एक टाइम के बाद ना बेसिकली डल तो हो जाएगा पर्सन बट एक टाइम के बाद उसकी पढ़ाई भी कॉम्प्रोमाइज होगी बिकॉज प्रोडक्टिविटी द एफिशिएंसी विल रिड्यूस है ना सो ओलंपियाड प्रिपरेशन विल गेट बोरिंग विद नॉन स्टॉप स्टडी अगर आप लगातार पढ़ते ही जाओगे इतनी बोरिंग हो जानी है और मेनी स्टूडेंट्स गिव अप मिडवे काफी जोश के साथ दे स्टार्ट प्रिपरेशन फॉर ओलंपियाड्स एंड इवेंचुअली दे से यार ये नहीं यार ये क्या लाइफ है मेरी तो लाइफ ही बर्बाद हो गई एंड मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स एक्चुअली गिव अप दैट्स द सैड पार्ट ऑफ दैट जर्नी एंड मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स डोंट इवन स्टार्ट वो पहले ही देख लेते मेरे दीदी भैया ने ट्राई करा था है ना या तो उन्होंने छोड़ दिया या कंटिन्यू करा इन एनी ईदर ऑफ दोस केसेस इट वाज अ वेरी बोरिंग लाइफ दे वर लिविंग एंड सम ऑफ द स्टूडेंट्स डोंट इवन स्टार्ट कि भाई मेरे को ईदर और चॉइस है तो मैं लीजर टाइम में जाऊं ना सो मेनी स्टूडेंट्स डोंट इवन स्टार्ट एंड दैट्स अनदर पार्ट ऑफ द सैड स्टोरी so what I'm telling you is you have to balance your study and leisure. It's not about should I study or should I enjoy. You balance out study and enjoy time. And that's what we are going to talk about today. So before we see how to balance that, let's see what actually leisure time is. Leisure, depending on what pronunciation you use, it's one and the same thing. So basically, what is leisure time or leisure time? So leisure time is a period of time during which an individual is not engaged in work, obligations, or other mandatory activities. So इसको समझते हैं मतलब क्या हुआ? When I say work, work is like if you are an adult and you're going to office, that's your work. That's something you have to do. I mean, there's no choice. आपको करना है काम. If you are a homemaker, you are obliged to do. I mean, you have to do. भाई बच्चों के लिए खाना बनाना है, घर साफ करना है, whatever, n number of chores, lot of work to do if you're a homemaker more than if you're going to office. So the point is, when you are an adult, you have things to do, work, obligations होते हैं. And then if you are a student, study is something. Work को study से replace कर दीजिए. वो जरूरी है ना? वो तो करना ही है आपने. And then there are obligations. These obligations it's a standard notation or a standard dictionary where we say कि भाई obligation जब आता है work के अलावा obligation का मतलब है other obligatory work जैसे कि सुबह उठकर नहाना है मेरे को ब्रश करना है खाना खाना है ना I have to sleep I have to commute and I have to go to market so these are obligations these are
in addition to that work, है ना, work हो गया, obligations हो गया, which are apart from that, and there are other mandatory activities that I am supposed to do. तो लीजर टाइम वो टाइम होता है जब आप इनमें से कुछ नहीं कर रहे. अब आप सोचिए, अब आप लेटे हो, बैठे हो, है ना, या आप पेंटिंग कर रहे हो. If painting is not part of your actual work where you're earning by painting, if you're just doing as a hobby, you're doing something apart from what you were supposed to do or obliged to do. Similarly, gardening कर रहे हो, cooking कर रहे हो, cooking not in the sense of cooking करने वाली cooking कि भाई करना ही है, वो तो पेट भरना है, cooking करनी है. But let's say you're a student and you say, okay, एक break लेकर मैं कुछ एक्स्ट्रा बना देता हूँ, मम्मी को अच्छा लगेगा, रायता बना देता हूँ, समथिंग विच यू आर नॉट ऑब्लाइज्ड टू डू, यू डू अपार्ट फ्रॉम दैट एंड विच रिलैक्सेस योर ब्रेन. So that is actually leisure time के कुछ apart from what you have to do you're doing, that is leisure time. And I always say कि a study plan remains incomplete without the inclusion of leisure time. अब ये क्यों मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि कई बार स्टूडेंट्स प्रिपेयर करना स्टार्ट करते हैं, चाहे ओलंपियाड हो, चाहे जेई हो, चाहे नीट हो, चाहे 10th का बोर्ड हो. स्टूडेंट्स मेक अ स्टडी प्लान, सुबह उठूंगा, ये करूंगा, है ना, फिर उसके बाद ये करना है, मेरे को ये करना है. एंड इन दैट स्टडी प्लान दे नेवर इंक्लूड द लीजर टाइम. एंड आई ऑलवेज से उस स्टडी प्लान में आपको लीजर टाइम इंक्लूड करना है. भाई सुबह 6 से 7 मैंने वॉक करना है, या शाम को मैंने पार्क जाना है, इतने बजे मैंने डांस क्लास जाना है, या खुद घर में म्यूजिक लगा के डांस करना है. That leisure time has to be part of study plan. Until that is part of the study plan, that study plan is not complete. तो स्टूडेंट्स का फर्स्ट रिस्पॉन्स आता है, सर क्या बोल रहे हो, सर कैसी बातें कर रहे हो, है ना, आप बोल रहे हो कि मैं पढ़ाई छोड़ के कबड्डी खेलने जाऊं, है ना, दैट्स व्हाट यू आर सेइंग. तो भाई सर थोड़ा थोड़ा धीरे प्लीज, है ना, ऑडियो लाउड है ना, पेरेंट्स कैन हियर दैट. और सीरियसली पेरेंट्स आपकी क्लास में आना बंद करवा देंगे कि ये कैसे टीचर है, इंस्टेड ऑफ मोटिवेटिंग स्टूडेंट टू स्टडी दे आर सेइंग जाके कबड्डी खेलो. तो सर मुझे तो टॉप करना है, मुझे तो पढ़ाई करनी है, आप प्लीज थोड़ा, है ना, आराम से. तो लेट्स अंडरस्टैंड विद द सिचुएशन के व्हाई एम आई सेइंग कि स्टडी टाइम में इंक्लूजन होना चाहिए लीजर टाइम का. सो लेट्स टेक एन एग्जांपल, लेट्स टॉक अबाउट रोहित. रोहित डिसाइड्स टू फिल द रूफटॉप वाटर टैंक, पानी की टंकी जो छत पर रखी होती है ना, उसको भर रहा है बकेट बाय बकेट. अब बकेट बाय बकेट क्यों भर रहा है, कुछ रीजन होगा, वी आर नॉट इंटरेस्टेड. हो सकता है मोटर खराब हो गई, हो सकता है कुछ भी है, कोई रीजन है, वी आर नॉट गोइंग इनटू द रीजन. कोई रीजन होगा कि ही टेक्स अ बकेट ऑफ वाटर, goes to the rooftop and fills the tank, then takes another bucket of water, goes to the rooftop, fills the tank. 1000 लीटर्स की बकेट है, एक बकेट में 5 लीटर पानी आता है, तो 200 ट्रिप्स उसको लगानी है छत पर, है ना. सो लेट्स टेक अ सिचुएशन टू अंडरस्टैंड. सो रोहित स्टार्ट्स एंथुजियास्टिकली, है ना, आज पानी पानी की टंकी भर कर रहूंगा. बट देन डोंट यू थिंक ओवर टाइम रोहित इज गोइंग टू गेट टायर्ड एंड लूज एंथुजियाज्म, है ना. पहली बाल्टी लेके गया, ठीक है, मजा आया, दूसरी लेकर गया, मजा आया, करते करते थक जाएगा, and he is going to get tired and not very enthusiastic, और टाइम ज्यादा लगेगा उसको, है ना. So wouldn't you think कि भाई a break would have helped, कि थोड़ा सा उसने भर लिया, एक एक ब्रेक ले लो, थोड़ा बॉडी रिलैक्स हो जाएगी, and then you start over, don't you think so? So if you have these two options, which one is better? Rohit works non-stop for 2 hours, पानी की टंकी 200 राउंड लगाने हैं, जितने भी लगाने हैं, या फिर रोहित टेक्स 5 minutes break every 15 minutes. 15 minutes उसने काम करा, 5 7 10 मिनट जो भी बनता है ना, just for the illustration I've written numbers here, and Rohit takes a break. So what do you think? Write in the comment box. Do you think the first one is a better choice or the second one? ऑब्वियसली द सेकेंड वन, क्योंकि 15 मिनट जब उसने मेहनत कर ली, उसने ब्रेक लिया, तो अगले 15 मिनट में वो ज्यादा एफिशिएंटली काम करेगा, क्योंकि वो रिचार्ज हो चुकी है उसकी बॉडी. अगर वो 15 मिनट प्लस 15 मिनट उस आधे घंटे लगातार काम करता वर्सेस 15 मिनट काम किया, ब्रेक लिया, फिर अगले 15 मिनट में, इन द सेकेंड सिचुएशन ही इज गोइंग टू वर्क बेटर, है ना. दैट्स द होल पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक. So let's take another situation which is more academic now. So Mahesh decides to study a concept today. कोई एक कॉन्सेप्ट होगा, फिजिक्स का कॉन्सेप्ट था, उसने कहा आज मैं ये खत्म करके रहूंगा. Now he starts like Rohit, Mahesh starts enthusiastically. Now over time Mahesh will tire, है ना, he will really be tired and then he will lose enthusiasm. So पहले घंटे में उसने जो जम के पढ़ाई करी, उसने जो अंडरस्टैंड किया, फिर वो न्यूमेरिकल्स करने बैठा, अब उसका ब्रेन थक चुका है ना. Now he may not be able to study as effectively as in the first hour.
सो डोंट यू थिंक अ ब्रेक वुड हैव बीन बेटर, कि उसने 1 घंटे जब पढ़ाई करी, 1.5 घंटा पढ़ाई करी, टेक अ ब्रेक एंड देन स्टार्ट ओवर. So again, looking at these two choices, कि भाई महेश studies non-stop for 6 hours, या Mahesh takes 30 minutes break every 2 hours. And numbers are for illustration. You can change as per your whatever your efficiency is after 1 hour, 2 hours. But just for sake of understanding, दो choice है. महेश को बिठा दिया, यहां से उठना नहीं है 6 घंटे तक. पहले घंटे तो उसने क्या मजेदार कॉन्सेप्ट है, फिजिक्स है भाई, मजा आ गया. And then after 1 hour he starts to do a numerical number one. ठीक है, मजा आया, फिर थक गया, ब्रेन थकता जा रहा है, थकता जा रहा है. सो डोंट यू थिंक उसकी एफिशिएंसी कम होती आ रही है, उससे मिस्टेक्स हो रही हैं, उसको ग्रास्पिंग पावर कम हो रही है, रिटेंशन कम हो रहा है. तो वो 6 आवर्स तक पढ़ने वाली सिचुएशन है. बट लेट्स से वी से कि बेटा महेश 1 1.5 2 घंटे पढ़ लो, उसके बाद आधा घंटा तुम ब्रेक ले लो, एंड देन यू स्टार्ट ओवर, देन ब्रेक ले लो. तो आई नो ब्रेक में टाइम खर्च हो रहा है, बट दैट ब्रेक इज रिचार्जिंग द ब्रेन, उसकी एफिशिएंसी बढ़ रही है. सो डोंट यू थिंक द सेकंड ऑप्शन इज मच मच बेटर इन दिस केस? सो स्टूडेंट्स का फिर रिस्पॉन्स आता है, ठीक है, हाँ समझ में आ गया भाई, ब्रेक लेना है ना, भवदीप सर ने समझा दिया कि भाई 2 घंटे पढ़ना है, आधा घंटा ब्रेक लेना है, तो समझ में आ गया. तो रिस्पॉन्स दिया भाई, ओके ब्रेक लेना सर, ठीक है, मोबाइल डेटा रिचार्ज कर लेता हूँ, डबल डेटा ट्रिपल डेटा रिचार्ज कर लेता हूँ, है ना, साथ में ब्रेक भी हो जाएगा, सोशलाइजिंग या गेमिंग भी हो जाएगी, है ना, आधा घंटा ब्रेक लेना है, चलो खट 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 खट, है ना, ब्रेक भी हो गया, यार दोस्तों से बातें भी हो गई, या फिर गेम खेलना है गेम भी खेल लिया. सही बात है ना, एक तीर से दो निशाने मार लिए. थैंक यू सो मच भवदीप सर, मजा आ रहा है पढ़ाई में भी और है ना सोशलाइजिंग में भी. बट रुको बेटा, रुको रुको रुको, प्लीज रुको, है ना, पहले तो हम समझ लें कि ब्रेक का मतलब क्या है यहाँ पर, है ना. व्हाई आर वी फर्स्ट टेकिंग अ ब्रेक? लेट्स गो मोर साइंटिफिक हियर, कि वो ब्रेक लिया क्यों है, जस्ट नॉट फॉर द सेक ऑफ इट, व्हाई हैव वी टेकन द ब्रेक? सो व्हाट इज ब्रेक? ब्रेक इज टू रिलैक्स योर न्यूरॉन्स. ये वाला जो ब्रेक था, तो रोहित ने जो ब्रेक लिया था दैट वाज टू रिचार्ज द बॉडी, है ना, थक गई थी बॉडी. महेश ने ब्रेक लिया टू रिचार्ज द ब्रेन एफिशिएंसी, एंड दैट इज ऑल अबाउट न्यूरॉन्स. सो बेसिकली ब्रेक मींस टू रिलैक्स न्यूरॉन्स, नॉट टू स्टिमुलेट देम, क्योंकि पढ़ाई से तो स्टिमुलेट हो गए थे ना, उनको काम डाउन करना है भाई, शांत शांत शांत, रिलैक्स कर लो. सो ब्रेक ऐसा लेना है जिसमें रिलैक्स हो जाए न्यूरॉन्स, ना कि स्टिमुलेट हो जाए. नाउ डिजिटल मीडिया स्टिमुलेट्स. डिजिटल मीडिया जो भी होगा, चाहे वो व्हाट्सएप हो, कुछ भी हो यार, यूट्यूब हो, आई एम जस्ट सेइंग एनी डिजिटल मीडिया, अगर आप एक मूवी भी देख रहे हो, कोई वीडियो देख रहे हो, ये दैट स्टिमुलेट्स योर ब्रेन. एंड साइंटिफिक स्टडीज की बात कर रहा हूं, इट्स नॉट माय ओपिनियन, यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट एवर आई टॉक हियर, इट्स नॉट माय पर्सनल ओपिनियन, दीज आर बैक्ड बाय साइंटिफिक स्टडीज. एंड दैट इज व्हाई यू माइट हैव हर्ड, आजकल कितनी जगह लिखा होता है भाई, डिजिटल थिंग्स को आप साइड में रख दीजिए 1 घंटा बिफोर स्लीपिंग. आपने देखा होगा 1 घंटा 2 घंटा पहले. सो जो भी आपका स्लीप टाइम है, 1 2 घंटा पहले आप अपने व्हाट्सएप बंद कर दो, डेटा बंद कर दो, टीवी बंद कर दो, एंड यू शुड रिलैक्स योर ब्रेन. सो डिजिटल, उससे मीडिया से कट ऑफ हो जाना है 1 2 घंटे पहले, दैट्स कमिंग फ्रॉम साइंटिफिक स्टडीज. सो बिकॉज द रीजन फॉर दैट इज all this digital media actually stimulates your neurons, and the idea is to calm them down. So you have to opt for non-digital breaks. Break का मतलब ये नहीं है कि डेटा रिचार्ज कर लेता हूँ और है ना व्हाट्सएप पे लग जाऊंगा, यूट्यूब पे लग जाऊंगा. नो, दैट्स नॉट अ ब्रेक. ब्रेक इज टू मेक श्योर दैट योर न्यूरॉन्स आर गेटिंग calm down. सो जाओ बेटा, सो जाओ, है ना. दैट्स सो दैट इज कमिंग फ्रॉम नॉन डिजिटल ब्रेक्स. तो क्या ऑप्शंस है, अगर मतलब आज की नई जनरेशन हो आप, है ना, हमारे टाइम पे नहीं होता था मोबाइल, और कई बार स्टूडेंट्स, मैं जब ये बातें बोलता हूँ, कई बार ऑनेस्टली मैं बताऊँ, कई बार स्टूडेंट्स कहते हैं सर आप तो, है ना, यू आर ओल्ड एंड यू आर टॉकिंग अबाउट योर डेज व्हेन यू डिडंट इवन हैव लैंडलाइन फोन्स. अब हमारे टाइम पे तो मोबाइल के बिना थोड़ी लाइफ चलती, आप क्या पुराने टाइम की बात करते हो. तो अभी हम क्या करें, अगर मोबाइल नहीं है तो क्या करेंगे? तो देयर आर लॉट ऑफ मेनी ऑप्शंस. पिक अप अ हॉबी, डांसिंग, सिंगिंग, पेंटिंग. अब इसका मतलब ये नहीं कि यू हैव टू बी वेरी प्रोफिशिएंट, वेरी वेरी गुड डांसर, कि मेरे को तो डांस स्टेप्स ही नहीं आते. इट्स अ हॉबी, इट्स नॉट लाइक प्रोफेशनली आप कहीं 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 परफॉर्म करने वाले हो. आप कमरा बंद करके एकांत में डांस कर रहे हो, सिंगिंग कर रहे हो, बाथरूम सिंगिंग कर रहे हो, पेंटिंग कर रहे हो, कुछ भी ड्रॉ कर रहे हो, यू डोंट हैव टू बी परफेक्ट इन दैट. और स्पोर्ट, कोई स्पोर्ट ले लो, अगेन यू डोंट हैव टू बी वर्ल्ड का नंबर वन स्पोर्ट्स पर्सन टू प्ले अ स्पोर्ट, यू प्ले एनी स्पोर्ट, है ना, कुछ भी आप खेलिए, है ना, गार्डनिंग करिए.
आपके पास जमीन नहीं है तो आप एक गमला ले लीजिए, गमले में आपने कुछ भी लगा लो, या धनिया लगा लो, कुछ भी लगा लो, एक एक फ्लावर लगा लो, है ना। अभी सीजन चल रहा है, मैं बताता हूँ, सनफ्लावर्स लगा लीजिए आप। यू डू सम काइंड ऑफ गार्डनिंग, यू डोंट हैव टू हैव ए ह्यूज गार्डन, दो तीन पॉट्स, अगर आपके पास गमले नहीं, आप डब्बे ले लो, दही के डब्बे ले लो यार। सो यू डू समथिंग आउटसाइड ऑफ डिजिटल मीडिया, मे बी यू कैन डू सम कुकिंग। जाके मम्मी से बोलो भाई, टुडे आई विल चॉप द अनियंस, आई विल चॉप टोमेटोस, रायता बना लिया, सैलेड बना ली, समथिंग समथिंग यू डू, समथिंग आउटसाइड ऑफ योर स्टडी एंड रूटीन। You do some walking, some running. You do something. You know, there are lot many choices. You can be creative. You are the new generation. You will have better ideas than me. मैंने तो यहाँ list down थोड़े से करे. So these are the things I'm talking about when you take a break. And again, going by the scientific studies, it clearly says, one of the studies says, leisure activities are associated with lower levels of anxiety. है, हमारे टाइम पे ये बीमारियां नहीं होती थी, ये तो हम एंजाइटी को एक यूज करते थे वर्ड, बट नाउ दीज आर रियल सीरियस प्रॉब्लम्स, एंजाइटी. सो स्टडीज हैव शोन लीजर एक्टिविटीज आर एसोसिएटेड विद लोअर लेवल्स ऑफ एंजाइटी, डिप्रेशन, कितने लोगों को डिप्रेशन है आज, स्ट्रेस, एज वेल एज एन इंक्रीज्ड सेंस ऑफ वेल बीइंग. जब आप एक लीजर टाइम स्पेंड करते हो, आपकी ओवरऑल हेल्थ इंप्रूव होती है, आपकी मेंटल हेल्थ, आपकी फिजिकल हेल्थ इंप्रूव होती है. साइंटिफिक स्टडीज से दैट, ये मेरा ओपिनियन नहीं है. अगेन, एंगेजिंग इन डाउन टाइम. व्हाट इज डाउन टाइम? डाउन टाइम इज बेसिकली द सेम थिंग. आप बड़ा दिमाग लगा के पूरा एफिशिएंटली कुछ काम कर रहे हो जो आपके ऑब्लिगेशंस हैं, maybe it's work, maybe whatever obligations, and then downtime is you're doing something which is not a mandatory activity. हो सकता है डाउन टाइम मतलब आप बैठ के सोच रहे हो, अच्छा कुछ सोच रहे हो, कुछ आइडियाज ला रहे हो, कुछ पोएम लिख रहे हो, दैट्स अनदर हॉबी. आपको बहुत अच्छी पोएम लिखने की जरूरत नहीं, यू राइट समथिंग, यू राइट एन आर्टिकल फॉर योरसेल्फ, राइट डायरी. So that is downtime, the downtime, है ना. Engaging in downtime is vital for your performance at work. जब आप downtime लेते हो, मतलब ब्रेक लेते हो, आपकी वर्क में जब आप वापस जाते हो, परफॉर्मेंस बढ़ जाती है. ये ओपिनियन नहीं है, these are the studies, scientific studies that have proven कि अगर कोई काम कर रहा है, उसको ब्रेक दिया जाए, फिर काम करवाया जाए, the person is going to work more efficiently, आउटपुट बेटर आएगा. It improves our performance at work, our sense of mental well-being, wider health, and protecting our brain function as we age. जैसे जैसे age बढ़ती है, we all know efficiency of brain reduces. That's a fact. But these leisure activities, they actually recharge our neurons. हमारी वो जो process है, that smoothens out. These are all facts. These are not opinions. तो यहाँ पे जब बात आती है तो स्टूडेंट आ सकता है, भाई समझ गया सर, कल से रोज 6 घंटे फुटबॉल खेलूंगा, है ना. आपने बोला लीजर टाइम कर रहा है, रोज 6 घंटे फुटबॉल खेलूंगा, न्यूरॉन्स को रिलैक्स करूंगा, खूब सारा रिलैक्स करूंगा. बट रुको बेटा रुको, बैलेंस जरूरी है. अगेन इट्स ऑल अबाउट द बैलेंस. एक एक्सट्रीम में नहीं जाना है. अभी हम बोल रहे थे कि भाई पढ़ाई 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 नहीं करनी, अब ये भी नहीं कि लीजर 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 करना. यू हैव टू बैलेंस आउट दीज थिंग्स. So use your judgment. And again, I am not the one who can say कि भाई आप 1 घंटा पढ़िए, 5 मिनट ब्रेक लीजिए, 15 मिनट लीजिए. There's no one size fits all. This is unique for every person. Again, this is very very important point. ऐसा नहीं कि मैं कुछ बता दूं, आपका टाइम टेबल बना दूं, नहीं. इसीलिए जब स्टूडेंट्स मेरे पास आते हैं ना, when they start preparing for some competitive exam, many students come to me and say, सर एक टाइम टेबल बना दो. एंड आई टेल देम, मैं नहीं बना सकता क्योंकि मैं आप नहीं हूं. मैं एक फ्रेमवर्क दे देता हूं उनको. आई जस्ट गिव देम ए फ्रेमवर्क, मे बी आई मेक अ वीडियो ऑन दैट. एक फ्रेमवर्क, एक ढांचा दे दिया, यू मोल्ड इट अराउंड एज पर योर ओन पर्सनैलिटी, योर पर्सनल डे टाइम. आपका कैसा दिन होता है, आपकी ऑब्लिगेशंस क्या है, मुझे नहीं पता. हर पर्सन डिफरेंट होता है. एवरी टाइम टेबल विल बी यूनिक. तो आपको वो जो बैलेंस बनाना है कि मैं नहीं बता पाऊंगा, आप एक्सपेरिमेंट्स करोगे, आप करोगे, मैं आज इतना पढ़ के इतना ब्रेक लेता हूं, फिर इतना पढ़ के इतना ब्रेक लेता हूं. दिस इज समथिंग यू कम अप, दैट इज अगेन योर यूनिक. वो मत सोचिए कि मैंने बना लिया, अब छुपा के रख लेता हूं इसको, कोई इसको कॉपी ना कर ले. नोबडी कैन कॉपी, because if somebody reads your schedule and tries to follow, maybe नहीं, that will definitely not work for that person. तो वो एक यूनिक आपका होगा.
और आप उसको बनाओगे, खुद बनाओगे, तो बैलेंस जरूरी है। ये नहीं कि मैं बता दिया भवदीप सर ने न्यूरॉन्स को रिलैक्स करना, अब दिन में 6 घंटे रिलैक्स करूंगा, ऐसा नहीं है ना। यू टेक योर यूज योर ओन जजमेंट. So you see how Olympiad preparation hinges on a balanced leisure time. So you have to do this and this. ये नहीं कि बचपन गवा दिया, क्योंकि बेटा मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, बचपन इज व्हाट यू हैव एज अ ट्रेजर. If you're continuously studying and not working on this area, then you're losing the most precious golden years of your life. You have to have leisure time. You have to have some kind of memories that you're making. This is equally important than this. This is very important. So when you say कि भाई पापा मम्मी सुन रहे हैं, वो आपकी क्लास में आना बंद करवा देंगे, so tell them this is the reason I'm telling you all this. There has to be a balance between the two. So begin your journey today. I assure you it is going to be enjoyable. This statement is for the students. वो जो list बताई थी ना कि भाई some students leave the journey midway, but there are certain students who don't start the journey with a fear कि भाई बड़ी boring life होने वाली है मेरी. So if you are one of those students who has been stopping yourself from studying for Olympiads, for preparing from Olympiads, today is the time. Start your journey today, and I guarantee, मैं गारंटीज बहुत कम देता हूँ. यूजुअली जब कोई आता है स्टूडेंट कहता है सर मैं एनरोल कर लूं आपकी क्लास में, आप गारंटी देते हो मेडल मिल जाएगा, मैं नहीं देता हूँ. सम टीचर्स माइट गिव यू गारंटी, आई नेवर डू दैट. आई से मैं एक गारंटी दे रहा हूँ, मेरी गाइडेंस इतनी अच्छी होगी कि इफ यू वर्क हार्ड विद योर फुल डिटर्मिनेशन एंड एफर्ट, यू विल गेट ए मेडल. तो वो टर्म्स एंड कंडीशंस में लगा के गारंटी देता हूँ कि भाई अगर आप मेहनत करोगे विद माय गाइडेंस, गारंटी है. बट अगर सिर्फ मेरी गाइडेंस के बल पे कर रहे हो, नहीं, मेहनत तो करनी है, तो गारंटी बहुत कम देता हूं विद कंडीशंस. Here I'm giving you a guarantee. If you begin your journey today and you balance out properly, then it is 100% going to be enjoyable. Again, आपने सिर्फ ये या सिर्फ ये नहीं करना, वो बैलेंस आपने देखना अपनी लाइफ का कैसे फिट होता है. And you start your journey today, balance out the things, guarantee आप enjoy करोगे इस जर्नी को. जर्नी एंजॉय करोगे जैसे ध्रुव ने करी. Dhruv was our student, Vedantu ka student, who made us proud by winning a gold medal in Physics Olympiad in 2023. Aditi and Avnish, equally proud moment for us as in not just Vedantu ke log, it's a proud moment for the entire country. India got a silver medal in Chemistry Olympiad in 2023. Medals की line भरी पड़ी है. There is no time to show them all. I'm just showing you 2023 के दो medals. नाउ कहां से शुरू करनी है जर्नी? ऑब्वियसली ऑलवेज से कि सक्सेस इक्वेशन ले लीजिए ये वाली. इस इक्वेशन से सक्सेस गारंटीड है. गारंटी मैं इसमें भी दे रहा हूं. आपको एक अच्छा गुरु चाहिए, हो सकता है मैं आपका गुरु हूं, आप कोई और भी गुरु ले सकते हो. आई एम नॉट सेइंग आई एम द ओनली गुरु. यू जस्ट फाइंड अ बेटर गुड गुरु, नॉट बेटर, अ गुड गुरु, एंड फॉलो द एडवाइस विद योर डिटर्मिनेशन, योर हार्ड वर्क. सक्सेस गारंटी है. गुरु का डिटर्मिनेशन और हार्ड वर्क नहीं, गुरु का डिटर्मिनेशन होगा टू गिव यू द राइट गाइडेंस, टू शो यू द पाथ. उस रास्ते पर आपने हार्ड वर्क करके चलना है. जब ये तीनों कॉम्बिनेशन होंगे, सक्सेस मिल जाएगी. अगर आपके पास कोई अच्छा गुरु है, आप बहुत ब्लेस्ड हो. I'm not saying to you take my classes. I'm saying whatever right guru you have, you continue to follow the path with your full effort. In case you're looking for a guru, I am here for you, and I have trained so many students, and my teaching speaks for itself. I have trained so many students and I have made many students. अब देखिए कई students ऊपर से ही होते हैं, उनको ऊपर उठा दिया जाता है. कई बच्चे बहुत नीचे लेवल पे होते हैं, उनका जो conceptual clarity होती है, वहां से भी उठाया मैंने बच्चों को. So all this is coming with my experience. So I have started a batch for NSEP, the Physics Olympiad जो होता है, उसके लिए मॉड्यूल 2 स्टार्ट हो रहा है 18 मार्च को. थ्राइस अ वीक क्लासेस होंगी, 6 से 7:30 PM लाइव क्लासेस है ना. लाइव क्लासेस मैं आपको स्क्रीनशॉट भी दिखा दूंगा. एंड दीज आर स्केड्यूल्ड क्लासेस. अगर अगर जरूरत पड़ती है वी स्केड्यूल मोर एक्स्ट्रा क्लासेस. असाइनमेंट आफ्टर एवरी लेक्चर विच इज हैंड क्राफ्टेड बाय मी ऑन द टेलीग्राम ग्रुप, नॉट चैनल, ग्रुप, जहां पे आप भी टाइप कर सकते हो. लाइक माइंडेड स्टूडेंट्स है जो प्रिपेयर कर रहे हैं, ऑसम कम्युनिटी है वेयर एवरीबडी इज हेल्पिंग ईच अदर. आप एक डाउट पोस्ट करोगे, बिफोर आई आंसर यू, पीपल विल जंप इन, स्टूडेंट्स विल जंप इन टू आंसर यू, क्योंकि उनको पता है जब वो हेल्प कर रहे हैं आपकी, उनकी भी हेल्प हो रही है, उनके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो रहे हैं. नाउ अगेन देयर विल बी अ टेस्ट एवरी संडे एट 10 o'clock in the morning, and the price for this module 2, I will show you what these modules are. Module 2 is only 2000. मॉड्यूल 1 जो हो चुका है उसकी भी रिकॉर्डिंग आपको साथ में चाहिए तो 2500.
2000 में मॉड्यूल 1 साथ में चाहिए रिकॉर्डिंग तो 2500 which is nominal fee and again there is a 10% discount going on. Click on the link below. There is a discount coupon of 10%. So this is the Telegram group I was talking about and this is how the classes happen and a quiz hota hai. You choose ABCD on your keyboard and mouse and then leaderboard banta hai where you see where you stand in the class. And again, we celebrate when there is some good result, like 90% students gave the right answer. So let's celebrate. Leisure time in the class, and leisure time in the class. So these are the modules. So 5 modules total. First module, maybe we have done motion, relative motion, laws of motion, friction. If you're comfortable with this, you can start with this 18th March को. And again, for this, there is no prerequisite. ऐसे कई बार स्टूडेंट्स कहते हैं ये मिस हो गया, अब इसमें क्या करूंगा? मैं कहता हूं एक प्री रिक्विजिट है आपका जोश. इफ यू आर जोशफुल इनफ, ज्वाइन दिस मॉड्यूल. आई गारंटी यू, अगर आप में मेहनत करने की इच्छा है, अगर आपने मिस कर दिया है, आप इसमें एक्सेल करोगे. मैं बता रहा हूं, आपको जोश दिखाना है, आपने कमिटमेंट करना है, आप मेहनत करोगे, जितने असाइनमेंट मैं दूंगा आप करोगे टेलीग्राम में, जो मैं बोलूंगा पढ़कर आना, पढ़कर आओगे, ये मॉड्यूल में आप सक्सेस होगे. इवन इफ यू हैव नॉट ज्वाइन दैट वन. वो मॉड्यूल 18 आवर्स का था, स्टूडेंट सेट ज्यादा पढ़ाओ, हमने सारे मॉड्यूल 36 आवर्स के कर दिए एंड द फीस इज ओनली 2000 फॉर ईच मॉड्यूल. हाउ डू यू ज्वाइन? गो टू vedantu.com, क्लिक ऑन कोर्सेस. ऊपर यहां दिखेगा vedantu.com में कोर्सेस करोगे जैसे क्लिक, ये पूरा खुल जाएगा एंड वंस दिस ओपन्स अप यू गो टू ओलंपियाड हियर. देन देयर आर दीज टू ऑप्शंस, एनएसईपी मॉड्यूल 2 लाइव या मॉड्यूल 2 लाइव प्लस मॉड्यूल 1 रिकॉर्डेड. So module 2 live is 2000, module 2 live plus module 1 record is 2500 minus 10% discount जो चल रहा है अभी. So again, even if you're not joining that module, that's okay. Please join this. ये आप मिस नहीं कर सकते, है ना. मॉड्यूल 1 मॉड्यूल 2 आप बाय करते हैं वो अलग बात है, ये तो आप प्लीज ज्वाइन कर लीजिए टुडे राइट नाउ, क्योंकि दिस इज वेयर यू गेट द फ्री मटेरियल टू स्टडी. And I always end by saying believe in yourself, achieve your dreams. अगर आप सोकर उठते हो और बोलते हो कि शायद मेरा आईआईटी में एडमिशन हो जाएगा, तो दैट शायद वर्ड विल गारंटी आपका एडमिशन नहीं होगा. You have to throw away that shayad word. You have to wake up in the morning and say I will go to IIT. बस एक बार आपने बिलीव अपने ऊपर कर लिया, you will achieve your dreams. And then again यहाँ वेदांतु लिखा है, but you can replace that with any guru, है ना, because I am part of Vedantu community. So I will be saying कि अगर आप वेदांतु में आते हो, we are the right gurus, plus your determination, your hard work will give you success. अगर आपको कोई अच्छा गुरु मिल जाता है, continue. So thank you, beta. Thank you. See you soon. Keep up the Josh. That will guarantee your success. Leisure time plus study will guarantee आप मजा भी आएगा आपको पढ़ने में और आपको सक्सेस भी मिलेगी. So bye bye. Take care.